कहाँ सवाल है भाई, हम कुछ तो करना नहीं रहे, हम मिस्टर मुखर्जी, फैक्ट हम क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं मिस्टर मुखर्जी, ये आपने जो बोला ना ब्लैकमेलिंग की बात, तो ये गलत बोल रहे हैं। नहीं हुजूर, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप तो साहब पत्नी को छोड़ करके नहीं शादी कर ली, वही चीज हुजूर हम कह रहे हैं। आपको क्या मोरल है ये सब बोलने इलिसिट का? रिलेशन के कारण हुजूर, हम हुजूर यही बात नहीं बोलना चाह रहे थे हुजूर, यही चीज हुजूर हम नहीं बोलना चाह रहे थे, कोर्ट में उचित नहीं होता। आपका अगर नहीं प्रूव हुआ है तो बोलिए भी नहीं, बिकॉज दैट वो विल हुजूर गो अगेंस्ट यू। एविडेंस इट हैज बिकम वेरी कॉमन मेरा जो कि एविडेंस जब कुछ हुआ तो पत्नी के खिलाफ कुछ आरोप लगा दिए। नहीं नहीं, शुरू से ही हुजूर अपने बहनोई के साथ इसका ये, और आज भी बहनोई का ये बात हुजूर नहीं बोलना हम चाह रहे। आया है कहीं एविडेंस में? आया है? एविडेंस में हम आया है, एविडेंस में आया है जी हुजूर। हम जो बोले हैं वो हुजूर एविडेंस में हम जो वहाँ कोर्ट में बोले हैं, कोर्ट बिलो में, उसमें हुजूर आया है कि ये बहनोई के साथ हुजूर रहता है। सिर्फ 5 दिन मेरे यहाँ रहा है, सिर्फ 5 दिन, और उसके बदले में हुजूर हम लगातार पेमेंट किए। आपका क्या सेटलमेंट हुआ है? सेटलमेंट हुजूर बहुत अच्छा खासा हुआ है। क्या? हम हुजूर अपने फाइल में 7 लाख लिखे हैं, मगर मेरा मेमोरी कह रहा है हुजूर 9 लाख, इसलिए हुजूर 7 या 9 लाख में हुजूर सेटल हुआ है। वन टाइम सेटलमेंट? वन टाइम सेटलमेंट। हम अब गलती से हम लिखे हैं या मेरे, आप एक एफिडेविट दीजिए, हमारा एक शॉर्ट एफिडेविट दीजिए। मान लो 1 हफ्ता का टाइम दिया जाए, हम 100 एफिडेविट देते हैं तो। हाँ, आप भी बात कर लीजिए तब तक। ठीक है, बात कर लेते हैं। हम इनको बोल लिखिए, चुके थे। मिस्टर अजय कुमार मुखर्जी, लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर in criminal revision number 815 of 2018 has vehemently submitted before this court that there is a talk of compromise between the petitioner and the opposite party number 2, and to his knowledge both the parties have agreed on a one-time settlement. Full stop. Next, land counsel for the OP number 2 says that he has no such instruction. Full stop. Next, Mr. Mukherjee requests for 1 week time to file an affidavit in this regard. Full stop. Let this matter be listed under the same heading after 1 week, maintaining its position. Both the matters कर दीजिए, दोनों का एक साथ। हमको भी एफिडेविट नहीं नहीं, हमको देखें मेरा हुजूर ऑलरेडी। आप इंस्ट्रक्शन सीख कर लीजिए, ये एफिडेविट अगर देंगे ठीक है तो आप डिनाई नहीं करेंगे तो हम मानेंगे नहीं कि हाँ एफिडेविट। हुजूर, तब मेरा ऑलरेडी अगर तब तो हमको भी एफिडेविट देना पड़ेगा, नहीं देंगे उनका रिप्लाई करना पड़ेगा। या तो एडमिट करें यार, कह रहे हैं ना कि 9 लाख में आपकी बात हुई है। 19। हाँ ठीक है, ऑलरेडी हुजूर मेरा बना हुआ है, मगर हम एफिडेविट नहीं हुआ है बस। कोई बात नहीं, आप एफिडेविट करा के फाइल कीजिए। यस, dated 11/6/2018, by which bail of the petitioner was allowed and 8,000 per month. 8,000 Yes, Your Lordship. issue notice. हो गया है। Lordship, I am appearing on behalf of the You are opposing party appearing? upon the पहले notice, हुजूर, Your Lordship. इसके पहले Yes. हुजूर, How such condition may be imposed? mean Uh, The operative portion is second page of the order of the Learned Sessions Judge, Your Lordship. Normally, हाँ वो what I do, Lordship. I tell you. Legally, I am of the view that no such condition may be imposed. जी वो सही है। While granting bail, the court has to only impose such conditions which are required to secure his appearance Lordship, in course of trial. Lordship, This is the settled position. Lordship, Lordship. Yes, then looking into the facts of the case, if the court feels that the wife is being neglected and she is not having any independent source of income, then normally I call upon the husband who is before the court to show his bona fide whether he is ready to pay something to his wife. Lordship. And when he says that all right, I will give whatever amount he says, my view is that persuades me to take a view
that he is taking a bona fide plea and his prayer for bail should be considered, keeping in view that aspect also. Lordship, I do appreciate Lordship. But how can the court impose a condition you pay this much, taking upon itself the jurisdiction of the court, the family court? Lordship. I am realizing that, Your Lordship. But in the background of the finding of the learned session judge that two minor children, she was kicked out, and the petitioner married in the year 2018 itself. Very right. So I will call upon him to show his bona fides. अगर इनका bona fides नहीं देखेंगे इनका हम रिजेक्ट कर देंगे. जी होना ये चाहिए ना. जी एकदम मतलब इनका अगर bona fides नहीं दिखेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे इनका. जी. बट बेल में ये कंडीशन कैसे लगाना हमको भी लगता है कि ये सही नहीं है, और हुजूर का जो व्यू है वो 100% सही है, लेकिन ये भी कहना कि हम कंडीशन लेके अगर कोई व्यू आता है लर्नड सेशंस जज साहब के तरफ से तो उसको लेके हम बेल ले लेते हैं, हम उसी समय इस चीज को रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए. जी बिल्कुल मतलब इस कंडीशन पे हम एग्री नहीं है. लेकिन लर्नड सेशन जज साहब ने ये लिखाया है कहीं कि ही हैज एग्रीड फॉर दिस? ये चीज तो हमारा बेल ऑर्डर आप निकाल के पढ़िए जितने हैं जी. and I never impose on from my own side. जी. I always in course of hearing I give the other side to think over it and then come out whether he would जो हुजूर का ऑर्डर तो offer something reasonably to his wife. जी. मैं किसी भी केस में मैं नहीं कहता हूं कि आप इतना दे दीजिए. हाँ, डिस्कशंस में ये जरूर चलता है कि व्हाट शुड बी रीजनेबल, व्हाट शुड नॉट बी रीजनेबल. लॉर्डशिप होना यही चाहिए. हुजूर का एकदम सही व्यू है. तो थोड़ा लीगलिस्टिक भी हो गया और थोड़ा इक्विटेबल भी हो गया. जी. लेकिन इस केस में क्या है? बोलिए जनाब, आपका क्या है? खाली कानून ही बहस कीजिएगा या कुछ रीजनेबलनेस भी है? वो जो उसके पहले ये परस्यू कर रही हैं मेंटेनेंस केस भी, उसका ऑर्डर हम लगाए हुए हैं हुजूर. उसमें कुछ मिला है इनको? जी हुजूर. कितना? प्लस 500 2000 रुपये हुआ है. 2000 रुपया आप दे रहे हैं? 4000 रुपया हुजूर दे रहे हैं, पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं. 4000 रुपया आप दे रहे हैं? ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा हुआ था 2/11/2000 लास्ट ऑर्डर में 4000 रुपये. कहाँ है? 2018 का ऑर्डर है नोटिस हुआ. हाँ ठीक है. 4000 आप दे रहे हैं ना? 4000 आप देते रहिए. 4000 देते रहिए तत्काल. उसके लिए तो आप तैयार हैं, जो दे रहे हैं उसके लिए तो तैयार हैं कि उसमें भी कुछ इच्छा है नहीं देने की. उसमें इनका हुजूर ये हमको नेग्लेक्ट कर दी हैं ये इनका. अब ये सब तो लंबी कहानी हो जाएगी. 2004 की शादी. ये पुलिस केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है. सारे चीजों को चार्जशीट सबमिट हुआ है, और ये अपने पिटीशन में भी लिखे हैं कि हम 2018 में अभी जो रिवीजन पिटीशन है उसमें भी लिखे हैं, और लर्नड सेशन जज साहब के यहाँ भी आया है कि ये ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ. तो 3 लोगों का जी, दोनों बच्चे मेरे पास हैं. मेरे ही घर में रह रही हैं हुजूर, और बाहर नहीं रह रही, मेरे ही घर में रह रही. आप करते क्या है? अभी कुछ नहीं करते हैं हुजूर. मकान है. सर्विस क्या करते हैं? पहले एमआर का काम करते थे, आज अभी कुछ नहीं करते. क्या छोड़ दिए क्या नौकरी आप? अभी छूटा हुआ है. अच्छा खासा प्रॉपर्टी भी है, कमाते भी हैं. मकान है, मेरे ही मकान में रहती है. दूसरी शादी भी कर चुके हैं, पहले घर और पहली वाइफ को नहीं देख रहे हैं, उनके बच्चों को नहीं देख रहे हैं. अब मैरिड तो
और अभी महंगाई के समय में मेंटेनेंस केस में क्या कर रहे हैं कि 1500 रुपया और वो अलाउ नहीं, वो मेंटेनेंस केस में जो हुआ उसके बाद ये केस हुआ उसके बाद कि ये मतलब मेंटेनेंस केस में इसमें आया है कि जो अलाउ हुआ है वो ये पे नहीं कर रहे थे, हाँ पे नहीं कर रहे थे, पे नहीं कर रहे नहीं थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। वो फाइनल ऑर्डर हो गया 125 का, नहीं फाइनल तो नहीं हुआ है, इंटरिम मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस हुआ था, हाँ, इंटरिम मेंटेनेंस हुआ था। तो आप उसको तो वायलेट कर रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे तब लर्नेड सेशन जज साहब और ये कंसेंट दिए हैं, अगर इन कंसेंट नहीं दिए रहते तो कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता। कंसेंट का नहीं है, इसमें है कि कंसेंट अगर होता रिकॉर्डेड तो बात अलग नहीं, हो जाती। रिकॉर्डेड नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द पेटिशनर शैल पे। तो ये इनके ऊपर था, अगर इनको लगा कि मतलब तो ये अब ये बेनिफिट ले रहे हैं 18 से एंटीसिपेटरी बिल का। और कब फाइल किए हैं ये? 18 का ही फाइलिंग जी इमीडिएटली फाइल किया विद इन 1 मंथ जी 11/6/18 का ऑर्डर है। और बोलिए क्या इंस्ट्रक्शन है, आप देते रहेंगे जो अभी आप दे रहे हैं? के बाद वो मेंटेनेंस में जो होगा, वो मेंटेनेंस केस में जो होगा वो हम देंगे। इस केस 3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं और रह रही है मेरे ही साथ में। ठीक है, आपके साथ ही रह रही है। जी, 3 बच्चे हैं और वाइफ है, तो रहने से खर्च नहीं होता है। बच्चों के लिए हम दे रहे हैं जो खर्च। क्या दे रहे हैं आप? बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्च पेटिशनर ही देते हैं। उसका खर्च आप अलग से दे रहे हैं? जी, स्कूल फी वगैरह सब दे रहे हैं आप? जी, मेरे ही मकान में रहती है। ओह, जो पूछ रहे हैं उसको स्पेसिफिकली बोलते जाइए ना। उसका स्कूल फी, अदर एक्सपेंसेस जितना है सब आप पे कर रहे हैं। इस पे इंस्ट्रक्शन है नहीं, लेकिन बच्चों का खर्च वो धीरे से आके कान में बोले तो आप समझ गए। अभी आपका मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये सब। तो आप क्या समझते हैं कि खाली वकील ही क्रॉस एग्जामिन करते हैं क्या? वकील भी क्रॉस एग्जामिन होते हैं? अभी मैं आपसे वही एक्सट्रैक्ट ले रहा था कि जरा बोलिए और आगे बोलिए। ये रह रही है मेरे ही घर में अभी एट प्रेजेंट। संभाल रहे हैं आप? ये मन जो है संभाल रहे हैं आपको बीच में ट्यूटरिंग कर करके। आप फंसते जा रहे थे। अभी बच्चों का खर्च देते हैं, बच्चों का खर्च यही तो पूछ रहे हैं आपसे। उसका ट्यूशन फी वगैरह जो होता है, स्कूल फीस आप दे रहे हैं ना? इनके ही हैं, उसमें नो डाउट इनके ही हैं। थोड़ा बढ़िया से बोलिए ना, सवाल करके कि हाँ देते हैं। उस पे नहीं क्लियर नहीं है। एक चीज और देखा जाएगा, आप इंस्ट्रक्शन लेके बताइए। लीगली स्पीकिंग ठीक है, पॉइंट्स हैं आपके पास पास करने के लिए, बट यू आर इन रिविजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। तो हम देखेंगे, और अगर लगेगा कि नहीं देयर इज नो परवर्सिटी विद दिस ऑर्डर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो आपका रिवीजन खारिज भी हो सकता है। इसलिए ये मन मत बना लीजिए कि आप जीत रहे हैं। बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस जो कोर्ट का होता है ना, वो जस्ट टू टेस्ट दी बोथ द साइड्स होता है। बोलिए, खारिज भी कर दें, इसको कर दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 4000 पे कर दिया जाए, जो दे रहे हैं अभी तक देते आए हैं, कभी फेल नहीं किए हैं। 4000 आप दे रहे हैं अपनी मर्जी से, और रह रही है मेरे ही घर में। वो रिकॉर्ड करेंगे हम कि आप अपने घर में इनको रख रहे हैं, रह रही है। और बच्चों का खर्च आप दे रहे हैं। बच्चों वाला हुजूर छोड़ दिया जाए। अब अभी छोड़ कैसे देंगे? दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4000 दिन पे दिन एजुकेशन महंगा होता जा रहा है। 2 बच्चे हैं। लिखिए, 2 माइनर बच्चे हैं जी। लिखिए, heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the OP number 2 has also learned APP for the state. Petitioner in the present case is aggrieved by and dissatisfied with the order dated 11/6/2018 passed by learned sessions judge Samastipur in ABP number 1089 of 2018, by which, while considering the prayer for anticipatory bail of the petitioner, the learned court below has granted the bail
subject to the condition that the petitioner shall pay rupees 8,000 per month to the informant either by bank account of the informant or through nazarat of the civil court till disposal of the case. Failing which his anticipatory privilege of anticipatory bail shall be deemed to be cancelled. Full stop. Next. That counsel for the petitioner has assailed the condition imposed in the order dated 11/6/18 to the extent that the petitioner shall pay rupees 8,000 per month to the informant. Full stop. His submission is that the learned session judge could not have incorporated any such condition which was not required to secure the presence of the petitioner. Full stop. Next, in course of his submission, learned counsel submits that the petitioner has been providing the residential accommodation to his wife in his own house, where she is living with the two minor children. Full stop. At one stage, learned counsel went on to state that the petitioner is also meeting the expenses of the minor children. But as the court proceeded to know the kind of expenses he is paying for the children, the learned counsel has shown his unawareness on that score. Full stop. He has also become tentative while proceeding to argue and support his contention, saying that the petitioner is meeting the expenses of the children. Full stop. Next. Learned counsel submits that in terms of the interim order of this court dated 2/11/2018, the petitioner is presently paying rupees 4,000 per month to the OP number 2, and on his own volition he would continue to pay rupees 4,000 per month, subject however to such order or orders which may be passed by a competent court in future for any amount more than rupees 4,000. Full stop. Thus, in other words, he undertakes that the petitioner shall pay at least rupees 4,000 per month to OP number 2 on his own. Full stop. Next. Mr. Sujit Kumar Singh, learned counsel for the OP number 2, submits that even though legally speaking, a condition to pay the maintenance may not form part of the bail order, but at the same time, considering the plight of the neglected women and children, the courts of law have developed the practice to call upon the husband to pay some amount
to his wife and minor children while considering the prayer for bail. Full stop. It is his submission that in the present day circumstances where the hearing of a maintenance case and other remedies are taking much time, the neglected women and children face a stage of starvation. And in such circumstance, the court cannot remain oblivious of the situations of a victim. Full stop. It is thus submitted that the law is developing, and unless the equitable consideration is found to be against the statute, it must be given effect to. Full stop. Next, this court, having heard land counsel for the parties, this court is of the considered opinion that being a constitutional court, the court sitting in its revisional jurisdiction would be required to consider as to whether on the anvil of law the impugned order imposing a condition to pay certain amount of maintenance for grant of bail would be wholly illegal to the extent it imposes that condition. Full stop. To this court, it appears that such imposition of such conditions may be required in an appropriate case. But that would be required to be tested in the facts of a particular case. Full stop. It cannot be said to be absolutely illegal. Though a regular court granting bail, considering a prayer for bail, may, instead of imposing a condition, try to impress upon the petitioner who is seeking bail in such cases to come out with a reasonable stand to pay certain amount to his wife who is on the verge of starvation for purpose of her livelihood, or for purpose of giving her some reprieve at this stage. Full stop. If the petitioner takes a reasonable stand on his own, that may, in the opinion of this court, be a reason to persuade the court to consider the bona fides of the petitioner. Full stop. Next, so far as the present case is concerned, Land Counsel for the petitioner has at this stage
on his own offered to pay a sum of rupees 4,000 per month to his wife and has also given an impression to this court that the petitioner is taking care of the expenses of his minor children and his wife and children are living in the same house. Therefore, this court is not going into much discussion on this aspect of the matter. Full stop. Land Council for the OP number 2 agrees for the present. इसमें एक चीज हम लिबर्टी चाहेंगे, क्योंकि हम जो जानकारी है, मेरी जो जानकारी है उसमें और जो इनका रिवीजन पिटीशन भी है, इसमें भी ये कहीं प्ली नहीं लिए हैं कि मेरे ही एड्रेस पे वो रह रही है। जो एड्रेस दिया गया है नोटिस के स्टेटमेंट दिया है ना जी, स्टेटमेंट दिया ना अभी कोर्ट में, भरवल है ना जी। नाउ इट इज रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर। नोट सर, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप नहीं जानते हैं? ठीक है, शेयर्ड हाउस होल्ड का प्रोविजन नहीं है तो फिर लेकिन हमको लगता है कि ये ऑर्डर जब लिखवा रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को हम ले रहे हैं जी, now it is forming part of the order. If he is misleading the court or otherwise you find that this is incorrect, वही एक लिबर्टी हुजूर से था कि उसमें अगर गलत होगा तो आप एप्रोप्रिएट कोर्ट में अप्लाई कीजिए फॉर शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या लिखा है? Land Council for the OP number 2 submits that for the present he would accept rupees 4,000 per month, but the petitioner must abide by what has been given to understand to this court with respect to the residence of the petitioner, residence of the OP number 2 and her minor children, and the other expenses of the minor children. Full stop. This court expects that what has been informed to this court are correct, and the petitioner would continue to pay rupees 4,000 per month to his wife besides the residence, and he would continue to take care of his minor children as has been informed to this court. Full stop. In these circumstances, the condition imposed in the impugned order is modified and it should be read as if the petitioner has on his own volition agreed to pay a sum of rupees 4,000 per month to the informant. Full stop. The rest of the impugned order needs no interference. This application stands disposed of accordingly. मेंटेनेंस केस को ही सेटल कर लें ये लोग दोनों, कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, कर लीजिए, बाद दिया जाएगा। सेटल हो जाता है तो इनके एफआईआर में भी लिखा हुआ है, दे देते हैं आप लोग। इफ द पार्टीज आर विलिंग टू सेटल द मैटर आउटसाइड द कोर्ट, they can jointly apply for sending the records of the case to the mediation center attached to the court below. मेंटेनेंस केस जो पेंडिंग है वो एक केस नहीं सेटल होगा ना, सेटल जब भी होगा तो सारे केसेज हो जाएंगे जी, मीडिएशन के थ्रू ही होगा। आपको मेंटेनेंस केस पर खाली जोर दे रहे हैं, इससे मैट्रिमोनियल मैटर जी, मैट्रिमोनियल मैटर में पीस मिल में क्यों सेटल कीजिएगा? ऑल केसेज भी रेफर टू द मेडिएशन सेंटर, वहां जितना सेटल कर लीजिए बढ़िया है।